नमस्ते दोस्तों। आज फिर से हम एक नया वीडियो लेके आए हैं यूपीएस के ऊपर। इससे पहले हमने जो वीडियो बनाई थी वो एक ब्रीफ थी कि उसमें हर वो चीज़ कवर की गई थी कि उसमें उसकी एडमिसिबिलिटी क्या है, उसका जो फॉर्म भरने का तारीख क्या सब है, कौन से फॉर्म में भरना है, बहुत सारी चीज़ों का हमने उसमें डिस्कशन किया था। अभी हम इसमें आज डिस्कशन करने जा रहे हैं कि हम अगर यूपीएस चुनते हैं तो हमारा पे आउट क्या होगी। पे आउट मतलब हमारे यूपीएस के अंडर में जो पेंशन हमें मिलने वाली है वो पे आउट क्या होगी। हमें जैसा बोला गया है कि हमारा पे आउट जो है 50% हो सकता है, तो किन सब चीज़ को हमारा कंसिडर करके हमारा जो पे आउट है वो कैलकुलेट किया जाएगा। आज हम इसके बारे में डिस्कशन करेंगे। तो पहले आ जाते हैं हमारे स्क्रीन के ऊपर। यहाँ पर पे आउट हमारी जो डिपेंड करेगी उसमें कुछ चीज़ें हैं, जैसा कि हमारा इंडिविजुअल कर्पस क्या है ना, हमारा एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन प्लस एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन। इससे पहले आपको बता दें कि ये जो हमारी जो चिट्ठी जो आई थी, गेजेट नोटिफिकेशन जो आई थी, ये लिया गया है कहाँ से ना, हमारा 19 मार्च 2025 को जो गेजेट नोटिफिकेशन आई थी उसके ऊपर ये लिया गया था। तो उसी से जो हमारा समरी निकलता है उसको हम देख के आज ये चीज़ आपके सामने लेके आ रहे हैं। तो पहला चीज़ हमारा क्या होता है, हमारा जो है पे आउट कौन सारी चीज़ों के ऊपर, कौन सारी कंपोनेंट के ऊपर हमारा डिपेंड करता है। ओके, एक हो गया हमारा इंडिविजुअल कर्पस क्या होता है ना, एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन एंड एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन। एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन आप सभी को पता है 10% हमारा जो बेसिक एंड डीए होता है उसका 10%, उसी हिसाब से एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन जो 14% एनपीएस के तहत हमारा अभी मिल रहा था एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन के तौर से, वो 10% हो जाएगा। बाकी पूल कर्पस जो है वो जो एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन 14 मिल रहा था वहाँ से 4 घटा के फिर 4.5% ऐड करके 8.5 हमारा जो भी बेसिक सैलरी होता है सरकार हमें दे रही है। एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन 8.5% हमारा रहेगा। उसके बाद और एक चीज़ होती है बेंचमार्क कर्पस। ये जो है ये टू बी कंप्यूटेड और कैलकुलेटेड बाय पीएफआरडी। इसको पीएफआरडीए डिसाइड करेगी कि हमारा बेंचमार्क कर्पस क्या होनी है पे आउट के लिए। ओके, नेक्स्ट एक डिपेंड होती है हमारा फाइनल विड्रॉल हमारा कितना हम जब अगर हम रिटायरमेंट के टाइम में लेना चाहें तो क्लॉज ये है कि हम 60% तक हमारा जो इंडिविजुअल कर्पस है उसका 60% तक, अप टू 60% वी कैन विड्रॉ ड्यूरिंग आवर रिटायरमेंट। तो ये सारी चीज़ों के ऊपर डिपेंड करेगी हमारा क्या है ना, फाइनल पे आउट जो है रिटायरमेंट के समय में क्या होगी। फिर और एक चीज़ है पी। यहाँ पर हमें एक वो गेजेट नोटिफिकेशन में लिया हुआ है एक पी क्या होगा ना, हमारा एवरेज ऑफ बेसिक पे ऑफ लास्ट 12 मंथ। हम जब रिटायरमेंट हमारा होगा उसी के जस्ट 12 मंथ का बेसिक पे का एवरेज जो होगा उसको हम पी लेके चलेंगे। क्यू क्या है ना, हमारा मंथ्स ऑफ क्वालिफाइंग सर्विसेज आर सर्टिफाइड बाय द हेड ऑफ द ऑफिस। अब जिस ऑफिस में काम कर रहे हैं उस ऑफिस के हेड जो ऑथराइज करके देंगे कि आपका मंथ कितने महीने का क्वालिफाइंग सर्विस है। हाँ, यूपीएस के लिए एक चीज़ आपको जाननी होगी, आपको मिनिमम 120 क्वालिफाइंग सर्विसेज चाहिए, 120 मंथ का। अगर 120 से कुछ भी कम होता है देन यूपीएस शैल नॉट बी एप्लीकेबल फॉर यू। तो आपको ये जाननी होगी, आपको यूपीएस के अंडर में आना है तो कम से कम आपका जो क्वालिफाइंग सर्विस है वो 120 मतलब 10 साल होना चाहिए कम से कम। अच्छा, क्यू जो है 300 के ऊपर जो भी क्यू होगा, 300 मतलब 25 साल का अगर होगा तो 25 25 × 12 300। अगर किसी का 30 साल का सर्विस होता है क्वालिफाइंग सर्विस तो उसमें क्या होता है ना, 30 × 12 360 होता है। तो जितना भी 300 के ऊपर रहेगा उसको कितना लिया जाएगा ना, द क्यू शैल बी टेकन एज 300 मैक्सिमम। अच्छा, उसमें हमारा 2 कंपोनेंट होगा, एक होगा एश्योर्ड पे आउट कैसे डिफाइन किया जाता है ना, P/2 मीन्स दिस वन इज P/2 मतलब आपका जितना एवरेज बेसिक पे होगा लास्ट 12 मंथ का बाई 2। सोचिए आपका किसी का, हम आगे बहुत सारे एग्जाम्पल लेके उसको देखेंगे। देन इनटू Q/300, Q मीन्स दिस वन इज Q
That means if 300, if you have qualifying service of 25 years, then this 300 by 300, that will be 1. And P, if P is 50,000, then 50,000 by 2 means 25,000. So if your average 12-month basic pay will be 50,000, then your assured payout is 25,000. That means 50%. Then what will be the admissible payout? Admissible payout is the payout what you will get after your retirement. Assured payout and assured payout is a component to decide your admissible payout, and you will get only the admissible payout. What will be calculated, that you will get only admissible payout after your retirement as your pension, means payout. Okay, what will be the assured payout? Assured payout will be admissible payout. Admissible payout will be your assured payout into IC by BC. IC means IC. What is IC? Your IC is, what is IC? This one is IC, employee contribution and employer contribution. Okay, by BC. BC means benchmark corpus. That will be calculated by your PFRD, जो भी उसको कैलकुलेशन किया होगा. Then into that will be multiplied by what? 1 minus FW. FW means this one is FW परसेंट, फाइनल विड्रॉल परसेंट. जितना भी आपका होगा उसी के ऊपर डिपेंड करेगा आपका एडमिसिबल पे आउट. दैट मीन्स व्हाट यू विल गेट आफ्टर योर रिटायरमेंट. देन कम टू नेक्स्ट. एक एग्जांपल ले रहे हैं कि अगर आपका इफ़ P इज 50,000, दैट मीन्स अगर आपका एवरेज बेसिक पे of last 12 month is 50,000, your qualifying service is 300. 300 means for qualifying services of 25 years and above. आपका 25 साल या 25 उसके ऊपर अगर मंथली क्वालिफाइंग सर्विस हो तो. IC मीन्स बेंचमार्क, योर इंडिविजुअल पर्पस. अगर सोचिए 50 लाख का है एंड बेंचमार्क पर्पस दैट मे बी फिक्स्ड बाय PFRD आज 50 लाख. अच्छा, एक चीज़ आपको बतानी होगी कि अगर आपका इंडिविजुअल कर्पस जो भी बेंचमार्क कर्पस फिक्स किया गया होगा उससे ज़्यादा होगा. इंडिविजुअल कर्पस अगर बेंचमार्क कर्पस से ज़्यादा हुआ होगा तो वो जो एक्सेस अमाउंट जो रहेगा वो रिटायरमेंट के टाइम में आपको आपके बैंक अकाउंट में क्रेडिट कर दिया जाएगा. तो पेंशन कैलकुलेशन, पे आउट कैलकुलेशन के लिए आपका इंडिविजुअल कर्पस कभी भी बेंचमार्क कर्पस के ऊपर नहीं जाएगा, क्योंकि जो भी एक्सेस अमाउंट होगी उसको आप PFRD क्या करेगी ना, आपके बैंक अकाउंट में भेज देगी. सोचिए आपका बेंचमार्क कर्पस 50,000 है और आपका इंडिविजुअल कर्पस 50 लाख है बेंचमार्क कर्पस, एंड योर इंडिविजुअल कर्पस सोचिए 52 लाख. देन दैट एक्सेस 2 लाख विल बी क्रेडिटेड टू योर बैंक अकाउंट ड्यूरिंग योर रिटायरमेंट. देन योर IC इंडिविजुअल कर्पस विल बी 50 lakh and benchmark corpus will be 50 lakh. And let's suppose your final withdrawal, you are not withdrawing any money during your retirement, then your final withdrawal will be 0%. Then what will be your admissible payout? आपको कितनी मिलनी है? ओके, वो फार्मूला हमने ला के डाल दिया. कहाँ से ना, ऊपर से. ये वाला जो फार्मूला थी ऊपर से ला के डाल दिए. तो P यहाँ कितना लेंगे? 50,000 बाई 2. ओके, Q 300 यहाँ से लिए हमारा. ओके, बाई 300. Then IC by BC into 1 minus 0%. 0% means 0 by 100. 50,000 by 2. But you will get 25,000. 300 by 300. 1. 50 lakh by 50 lakh. 1. Then 1 minus 0. 0 by 100 is 0. Then 1 minus 0 will be 1. So your admissible payout during after your retirement will be 50,000. That means it will be almost 50%. It will be 50% of your last your average basic pay of last 12 months. In this case only you will get 50% of your last basic pay. Let's take one more example. It is of example 2. We change the IC only. Here only we change the P is 50,000, Q is 300, your benchmark corpus is 50 lakh, and final withdrawal you are not withdrawing any money during your retirement. So only your individual corpus is less than your benchmark corpus. If this will be the scenario, then what will be the admissible payout? So same, your formula will be same. Okay, 50,000 by 2.
25,000. 300 by 300, 1. This 45 lakh by 50 lakh, this will be what? This will be 0.9, and 1 minus 0%, 0 by 100, this will be 1. Okay, then what will be your admissible payout? Your admissible payout will be, after multiplying all these factors, your admissible payout will be 25,500. Let's take another example. इस केस में हमने P सेम 50,000 लिया हुआ है. इन योर जो हमारा इंडिविजुअल कर्पस और बेंचमार्क कर्पस वो दोनों को हमने लिया हुआ है 40,000 करके, 40 लाख करके. दैट मीन्स योर IC इक्वल टू BC एंड योर FW फाइनल विड्रॉल जो है उसको 0% लिया हुआ. यहाँ कम क्या हुआ है, 300 क्वालिफाइंग जो मंथ से वो 300 के बदले हमने 240 लिया हुआ है. मतलब अगर किसी का 20 साल का, इसको आप वो छोड़ दीजिए, 20 साल का अगर किसी का सर्विस क्वालिफाइंग सर्विस है तो उस केस में क्या होगी, सेम P by 2, that means 50,000 by 2, which will be 25,000. 280 by 300, 240 by 300, your 240 is Q, then this will be 0.8. Then 40 lakh by 40 lakh, 1, then 1 minus 0 will be 1. Then what will be your assured payout? This one will be your assured payout. Assured payout will be 20,000. Then your multiplied by 1, that means IC by BC multiplied by 1 for final withdrawal. Then what will be your admissible payout? Your admissible payout will be 20,000. Then what is the percentage of your payout? Your percentage will be 40%. If your scenario is this kind of scenario you have, then you will get a payout of 40%. Then next example, let's talk about. Okay, your pay will be the same, 50 lakh. Q will be 300. That means you have qualifying service of 25 years or above. Okay, your IC individual corpus will be 50 lakh. Benchmark corpus will be 50 lakh. That means both are same. IC equal to BC. Okay, if you will withdraw 60% during your retirement, then what will be the scenario and what will be the percentage of payout you will get during your retirement? Okay, what is your admissible payout? Same formula, P by 2. P is your 50,000. What is P? As I said, your P is average of basic pay of last 12 months. Okay, P by 2 means 50,000 by 2. Okay, Q, here Q is 300, then Q by 300. Okay, your IC and BC. Then here one change we made. What is that? That means in previous cases your final withdrawal were 0, and here in this case only we are taking your final withdrawal as 60%. Okay, 60% means 60 by 100. Then let's calculate. Okay, 50,000 by 2, 25,000. 300 by 300, 1. 50 lakh by 50 lakh, 1. Your 1 minus 60 by 100 means 0.6. That means this factor will be 0.4. Okay, what will be your admissible amount? Then 25,000 into this 1 into 0.4, it will be 10,000. And what will be the percentage? It is only 20%. In this scenario, one will get 20% of payout. But his average basic pay of last 12 months was. Okay, let's see another example. In this scenario, we change your Q as 240. That means you have only 20 years of service. Let's ignore this above. Okay, 20 years of service. Then your IC is 5 lakh less than your BC. That means your IC is 35 lakh and BC let's suppose is 40 lakh. And you withdraw 60% of your individual corpus during your retirement. Then what will be your admissible payout? Okay, P by 2, that means 50,000 by 2. Okay, Q by 300. We take here Q as 240. Okay, 240 by 300. Then 35 lakh by 40 lakh. Then you have you are withdrawing 60% of your individual corpus. Then 1 minus 60 by 100. That means this will be 0.4. Okay, 25,000. This will come to 0.8.
and 35 lakh by 40 lakh, it will come to 0.875. Then this final withdrawal portion is 0.4. Okay, after multiplying all these factors, we will get what? Now your 7,000 only. In this scenario, what will be your payout percentage? Your payout percentage will be 14,000. Take another example. Here we are taking for minimum qualifying service of 10 years. Then that means what will be your minimum payout? How your minimum payout will be calculated? Okay, your P is 40,000. Okay, IC 10 lakh, BC 10 lakh. That means IC equal to BC. Okay, if you are not withdrawing any amount during your retirement, that means your final withdrawal will be 0%. Let's calculate your admissible payout. What will be your admissible payout? Is P by 2. Here P we have taken 40,000. Then 40,000 by 2. Okay, Q is 120. 120 by 300. IC, BC. Your IC is 10 lakh and BC is 10 lakh. Okay. Your final withdrawal, you are not taking any amount as your final withdrawal during your retirement, then your final withdrawal will be 0%. That means 1 minus 0 by 100. 0 percentage, as you know, 0 by 100, 5%, 5 by 100. Okay, then 1 minus 0. Okay, then this will comes to 20,000. This will comes to 0.4. This will come to 1. This will come to 1. This component is your assured payout, and as per the gazette notification, these assured payouts will not be less than 10,000. So your assured payout comes to what? 8,000. 20,000 into 0.4, 8,000. And this component is 1, this factor is 1, this is 1, we are taking this is 1. So we have to take this 8,000 as a minimum payout. Minimum assured payout will be 10,000. Then your this component is IC by BC. This component is due to your final withdrawal, which is 1. Then your admissible payout after your qualifying service of 10 years will be 10,000, which will be 25% of your average basic pay of last 12 months. Okay, let's take another example. Here we are taking everything same as your example 7, and only change we are making is if you are taking that final withdrawal during your retirement of 60% of your individual corpus. Okay, only this is the only change we are making here. Okay, your P is 40,000, Q is 120 qualifying services for only for 10 years service. Okay, IC 10 lakh, BC 10 lakh. That means your IC equal to BC. Then admissible payout, same formula. 40,000 by 2, 120 by 300, 10 lakh by 10 lakh, 1 by 60, 1 minus 60%. 60% means 60 by 100. This factor will come to 0.4. Okay. Then 40,000 by 2, 20, 120 by 300, 0.4. This come to 1 and this come to 0.4. Then, okay. This part is your assured payout, which should not be less than 10,000. So, what will be the amount? 20,000 into 0.4. It comes to 8,000, and this is your 1. This is 0.4. This amount should not at any circumstances less than that 10,000. So let's take this amount as 10,000. 10,000 into this factor 1, this factor 0.4. So after multiplying all these things, this 10,000, 1 and 0.4, it will come to 4,000. This will be your admissible payout. That means you will get this amount after your retirement. And what will be the percentage? This is only 10%. Okay. Let's take another example. If your IC, in this case only, your IC is less than your BC, that means your IC is 9 lakh and BC is 10 lakh. And here also you are taking withdrawal of 60% of your individual corpus. Same, P is 40,000 and qualifying service is 120. That means 10 years. Okay. Let's take this part is assured payout 40,000 by 2, 120 by 300, IC by BC, that means 9 lakh by 10 lakh, and 1 minus your FW is 60%. 60% means 60 by 100. Then
40,000 by 2, 20,000, 120 by 300, 0.4, 9 lakh by 10 lakh, 0.9, okay, 1 minus 0.6, 0.4. Now, as we know, only this component is your assured payout, and it should not be less than 10,000 in any circumstances. Then what will happening here? 20,000 into 0.4, 8,000. 0.9, 0.9, 0.4, 0.4. This 8,000 we will take it as 10,000. That means minimum assured pay is 10,000. Then what will be the factor? What will the components? This 10,000, this 0.9 and 0.4. After multiplying all these three components, we will get what will be our admissible payout. That means what we will get after our retirement. This amount comes to 3,600, which is 9% of your average basic pay of last 12 months. So these are the scenarios where we are getting the different percentage of payouts after our retirement, which will vary depending upon all these components. Let's see about your family payout. What will be your family payout if the employee or the retiree deceased during the during his service or after his service? That means during his retired period, what will be the payout? Simply it is saying that the admissible family payout will be 60% of admissible payout. That means what the employee is getting after his retirement, that admissible payout, your family payout will be 60% of that payout. Example, if your admissible payout is 25,000, then what will be your family payout? Simply, very simple, 25,000 into 60%. That means 60% of your admissible payout. That means which is that is 25,000. It comes to 15,000. This is a very simple thing. You will get family payout as 60% of your admissible payout. Let's suppose example 2, admissible payout will be if your admissible payout is 15,000, then the family payout will be 60% of 15,000. That means 60% of your admissible payout. That means what the deceased retiree or the deceased employee getting will get that admissible payout, that is 9,000. ये जो है ये बहुत पेचीदा नहीं है. Only you will get the family payout, that 60% of your admissible payout. Then one more component you will get with your payout, that may be your admissible payout or your family payout. That one is your dearness relief. डियरनेस रिलीफ. अभी जैसे हमारे पेंशनर्स जैसे डियरनेस रिलीफ अभी उनको मिल रहा है, उसी हिसाब से आपके पे आउट या फैमिली पे आउट जो भी आप ड्रॉ कर रहे हैं, अगर आप पे आउट ड्रॉ कर रहे हैं दैट मीन्स पेंशन आप ड्रॉ कर रहे हैं, फैमिली पे आउट मीन्स फैमिली पेंशन, सेम चीज़. उसमें उसको बस फैमिली पेंशन बोल रहे हैं, इसको फैमिली पे आउट बोल रहे हैं. उसको पेंशन बोल रहे हैं, इधर हम इसको पे आउट बोल रहे हैं. किसके? यूपीएस के अंडर में. जो ओपीएस के अंडर में पेंशन है इसमें पे आउट है, उसमें जहाँ जो फैमिली पेंशन है इसमें पे आउट है. तो हम डियरनेस रिलीफ कितना ड्रॉ करेंगे, ना किसके ऊपर ड्रॉ करेंगे, ना हमारा जो पे आउट बनेगी या फैमिली पे आउट बनेगी उसी के ऊपर हमें सिंपली जो क्या डियरनेस रिलीफ हमें ड्रॉ करना है. सोचिए किसी का पे आउट जो है वो 10,000 का है और अभी हमारा डीए चल रहा है 50% का. सो हमें कितना मिलेगा? 10,000 एंड 50% मीन्स 5,000. सो व्हाट विल वी गेट? वी विल गेट 15,000. दिस विल बी आवर पे आउट और फैमिली पे आउट एंड दिस विल बी द डीआर. सो बोथ वी विल गेट आज 15,000 आज आवर this 15,000 will be credited in our bank account. Okay, clear? तो ये हम समझते हैं, ये आज का जो वीडियो है पे आउट के ऊपर, ये आपको आपका जो पे आउट है ये कैलकुलेशन करने में मदद करेगी. और हमारा जो 8 एग्जाम्पल पे आउट के ऊपर दिया गया है और फैमिली पे आउट के ऊपर जो भी 2 एग्जाम्पल आपको दिया गया है
उस बेसिस पे आप देख लीजिए आप कौन से कैटेगरी में आ रहे हैं, आपका बेसिक पे क्या है या क्या होगी, और आपका इंडिविजुअल क्या है या क्या हो सकती है, और आप अगर कुछ फाइनल विड्रॉल लेना चाहेंगे तो उस हिसाब से आपका जो भी परसेंटेज यहाँ बनता है, अभी तक जितना नोटिफिकेशन आया है उसी के हिसाब से हमने उसको बनाया है, आपको समझाने की कोशिश की है। आप इसमें देख लीजिए कि आप यहाँ पर कौन से श्रेणी में आ रहे हैं और आपका जो पे आउट है वो कितनी बनेगी, और आप इसमें फ़ायदे में रहेंगे या एनपीएस में फ़ायदे में रहेंगे, इसको आपको डिसाइड करते हुए आपको आपका जो ऑप्शन है उसको चुननी होगी कि आप एनपीएस में रहना चाहेंगे या आप यूपीएस में आपका ऑप्शन जो है वो उसको देना चाहेंगे। तो अगर आज का वीडियो आपको हेल्पफुल रहे या आपको कुछ जानकारी हम इस वीडियो के माध्यम से दे पाए हैं तो इसको लाइक कीजिए और कमेंट कर दीजिए। अगर आपका कोई सुझाव है तो हमें भी मदद होगी, हम खुद को और भी रेक्टिफाई कर सके या और भी करेक्ट कर सके। और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। जय हिंद।